हाँ, विजिबिलिटी ठीक है? Yes, sir. ओके। सो हम लोग लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन किया था एंड दैट वाज फॉर एक डिस्क थी, राइट? वेट, लास्ट क्वेश्चन क्या था, एक बार बताओगे कोई? Yes, sir. Disk, sir. डिस्क था ना? Yes, sir. ओके। सो राइट, अ चार्ज माइनस क्यू अ चार्ज, सॉरी क्या कह रहे हैं? वीडियो मेरे साइड से ब्लर हो रहा है। और लोग देख के बताएंगे। It is clear, sir. Now. Clear, sir. या कंचन प्लीज चेक। हाँ, Yes, sir. a charge minus q is displaced a charge minus q is displaced at a distance small z this radius is capital R. A charge minus q is displaced at a distance z perpendicular to the center of a uniformly charged ring of charge density lambda, and z is much smaller than capital R. Z is much smaller than capital R. Find the frequency of harmonic oscillation. Find the frequency of harmonic oscillation. So what is electric field here? 0. Yes. And if you displace this little bit, say some distance z, if you displace this, then because net electric field is, you remember net electric field is in this direction. See your circular ring problem. So 1 by 4 pi epsilon naught 2 pi a lambda by z square. I'm saying net electric field is in this direction, z direction, right? Z cap direction. And what is that electric field at some distance? E is equal to, कोई चेक करके बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग। सर इसमें माइनस जेड का डायरेक्शन में नहीं आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों माइनस जेड में होगा जब ये लैम्डा है? This is a ring and the electric field will be in the direction. Check your problem ना, जो मैंने रिंग की प्रॉब्लम कराई है। So electric field will be in this direction. Now this charge, if it is displaced here, it will feel force toward the center. So charge minus q will feel force
towards center. Right? Charge minus Q will feel force towards the center. Yeah. So what is electric field at this point? Ring wali problem se batao. So I will write, so suppose I have a ring like this and I just want to know what is the electric field here at point Z. This has got radius R and charge density lambda. ये problem हम लोगों ने किया है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. पहले रिंग कराया फिर प्लेट Yes, का sir. बोलो भाई. So somebody tell me what is the profile of electric field at distance Z? Lambda ZA, E is equal to lambda ZA upon, so if I write in that term 1 upon 4 pi epsilon naught, ऐसे याद रखते हैं. जब दूर चले जाएंगे तो it will behave like a point charge ना. तो 1 by 4 pi epsilon naught Q. So Q कितना होगा? 2 pi R 2 pi A Z 2 pi R lambda by Z Z plus Z square plus by A. Z square plus R square whole power 3 by 2. R square plus Z square to the power 3 3 by 2 and Z by dash. 2. This will be the field profile, correct? And what is force? Charge into E. So it is minus Q into E. So that's why force will be towards minus Z direction. And if you displace it in the downward direction, then also the force will be towards the center. So that's why SHM will happen. So right here, force is equal to, bolo, M d2 Z by dt2 is equal to minus Q. What is this quantity? 1 by 4 pi epsilon naught. Z is very small. So I will write 2 pi R lambda Z by, here Z is very small, so it will be RQ. And you write it like this, d2Z by dt2 plus how much it will be? Q Q by M, Q lambda, no, Q lambda R cube lambda by M 2 epsilon naught M R square Z is equal to 0. Please check. Is this okay? So this can be compared with SHM. So what is omega? Under root of Q lambda Q lambda upon by 2 epsilon naught MR square. 2 epsilon naught MR square. Any doubt? और किसी को कुछ पूछना है तो you can ask.
Okay. Can I erase this? Yes, sir. पूजा समझ आ रहा है? Yes, sir. जब चार्ज को नीचे डिस्प्लेस करेंगे तो फोर्स किधर लगेगा? If I displace the charge downward, what will be the direction of force? Upward direction Upward. force. Yes, very good. And if I displace the charge upward, then? Then it also upward. No, then it is downward. You see, if you displace, put the minus q charge here because field is in this direction. Oh, sir. Sorry. Then force will be the downward Force will be direction. downward. And if you displace the charge here, minus q, then again field is in this direction. So again charge will be pushed towards the center. So that's why SHM will happen. Simple harmonic oscillation. Okay? Okay, sir. Okay. Can I erase this? Yes, Sir. sir. Okay. Now, very nice question. Please write. A thin non-conducting ring of radius capital R has linear charge density lambda is equal to lambda naught cos of phi. So it is like this. This is x-axis, this is y-axis, and this is the ring. And first time you are finding a charge density lambda like this. Okay. So please see, if you take a point P here, point P, this is what is called phi. So linear charge density is like this. So first of all, understand the question. You have to find the electric field at the center. Find, write the full question. A thin non-conducting ring of radius capital R. This radius is capital R. A thin non-conducting ring of radius capital R has a linear charge density. Lambda is equal to lambda naught cos phi. Okay. Phi is this angle. It is called azimuthal angle. Azimuthal angle. Find the electric field at the center of the ring at a distance z. So z is like this, somewhere here, is z axis. At a distance z, perpendicular from the center of the ring. Okay. So let me make the second figure to get this. पहले तो ये देखो, if lambda is the uniform charge density, suppose lambda is a uniform charge density, then what was electric field at the center? 0. Yes or no? Yes, sir.
if it was a uniform, because whatever field will be given by this dq will be cancelled by this dq, right? Opposite fields will be cancelled if this was uniform, but this is not the case here. यहाँ पे जो केस है वो अलग है. यहाँ पे केस क्या है? What is the case here? Here you have, यहाँ पे क्या है? Cos phi है. So lambda not cos phi meaning theta is equal to 0 पे it will be positive. Theta is equal to, here it will become 0. Cos 90 is 0. And just make this y axis like this. So this whole region will be positive, and this whole region will also be positive. You understand? And this whole region will be negative. Like this. So if you see by symmetry, if I take this total charge here and this total charge here, so electric field at the center will be outside because of positive and will be towards this. So net electric field will be in this direction. Can you see it by symmetry? Bolo. Yes, sir. So that's why it is different. Jesse, you get a profile. That's why this question has been asked in many exams. Generally, if they asked on the center, you may make a mistake कि तुम उसको 0 put कर दो answer. But that will be wrong. Because here cos phi is dictating the sign of the charge. Cos phi के हिसाब से sign जा रहा है. तो इधर positive होगा, इधर negative होगा, and everything will be towards minus x cap direction. Yes? Yes, sir. तो ऐसा करते हैं कि मैं z वाला ही निकालता हूं और फाइनल आंसर में z is equal to 0 पुट कर दूंगा तो सेंटर पे भी आ जाएगा. Yes or no? Or I Yes, sir. can do Yes, it sir. separately also. Separately, I give you as a homework. Take a dq charge here, and this will be field this side. And then take theta, it will be added, okay? ठीक है? So let me do the second part. So मैं अब इस figure को थोड़ा ऐसे बनाता हूं ताकि ये axis इधर आ जाए. So suppose this is that ring, and this is z, this is x, this is z. So this is z. So what will this will be x, right? And this will be y. Can you see this? So this is the xy plane. समझ आ रहा है? So if you take this angle phi, क्या बनेगा? ये angle phi होगा with x-axis. And using this small element here, I want to get electric field here. This is the question. एक बार देखो समझ आता है? Sir, we have rotated that ring. Ring was like this, so you have rotated it like this. Because you want it here, na? Electric field. On the z-axis. So this is the center O. Now this ring is in xy plane. So plane is like this. ये देखो ना, ये ऐसे था, इसको ऐसे कर दिया. तो z एक्सिस जो ये बाहर आ रही थी, ये अब ऐसे हो गई. ओके? Okay, sir. So this is z vector. This is r vector. And this is r vector. Please understand this. एक बार देखो ध्यान से. Are you able to get it?
or is there any doubt? So if you take a small element here, this element is dq. So that will be corresponding to lambda dl. यही formula होता है, small element. And if this small angle is say d phi, so angle is equal to arc upon radius, so arc is equal to r d phi. So this will become lambda naught r cos phi and d phi. Now what will be the electric field? Electric field will be, bolo, integral. This is dE because of this element. What will be electric field? 1 by 4 pi epsilon naught dq, which is lambda naught r cos phi d phi by R square. r square, and in the direction r cap. This is the direction of the field. देखो एक बार समझ आ रहा है? आराम आराम से करो, कोई डाउट है तो पूछते रहना. चेक, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? This is simple Coulomb's law. And if you want to write here vector r, then put r cube here. R cube. Now the problem is that जब phi बदलेगा तो field का direction भी बदलेगा, and you can't integrate. Integration कब हम करते हैं? जब एक बार वेक्टर का डायरेक्शन फिक्स हो जाता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बात को समझने के लिए. एंड द फंडामेंटली इट वाज गिवन इन इरुडोव, और उसके बाद सब ने पूछा है इसको, इंक्लूडिंग TIFR. सो ध्यान से देखो कि सपोज यू वांट टू कैलकुलेट फील्ड हियर बिकॉज ऑफ दिस. सो हियर इट इज पॉजिटिव, सो इट इज आउटसाइड, बट हियर इट इज नेगेटिव, सो इट इज टुवर्ड्स दिस, सो यू कांट ऐड. आर यू गेटिंग इट? जैसे जैसे तुम इस पे मूव करोगे, the sign is changing. So first of all, you have to fix that. You can only integrate once the sign is fixed, the direction is fixed. So for that, apply triangle law here. Triangle law is tail to head is equal to tail to head. So understand triangle law in this triangle. R plus R is equal to Z. So what is R? Z minus R, correct? Bolo bhai. Yes, sir. So E will become integral 1 by 4 pi epsilon naught lambda naught R cos phi d phi into this R, Z minus R, and by R cube कितना होगा? Z square plus R square to the power 3 by 2. चेक करो, ट्रायंगल लॉ लगाया है.
Is it okay? And now you just take care of that. अब मुझे integrate करना है d5 के corresponding. So I have to write this all in terms of that. Okay. So Z can't be written. It is separate. Z is separate, but at least R can be written. This vector can be written. This vector is like this, na? Suppose it was like this. So this is R. This is X, correct? This is phi. This is Y axis. So what is value of X? Tell me. R cos phi. What is value of Y? R sin phi. R sin phi. So you can write capital R as capital R vector को लिखो. Capital R vector can be written as बोलो. Root of x square plus y R square. R vector can be written as this R vector. इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको ब्रेक करो कंपोनेंट्स में. So it can be written as R cos phi x cap plus R sin phi y cap, right? Resolution. So this will give you electric field as, I am separating it now. Integral 1 by 4 pi epsilon naught lambda naught R cos phi Z cos phi d phi Z upon Z square plus R square to the power 3 by 2. One is this. Okay. And another one is minus integral of. Put the value of R. So it will become 1 upon 4 pi epsilon naught lambda naught R cos phi d phi. So first of all, I am writing R cos phi by Z square plus R square to the power 3 by 2. And another part will be coming from the Y. So that is minus integral 1 upon 4 pi epsilon naught R lambda naught R sin phi. So here it will be cos phi d phi and then R sin phi by Z square plus R square to the power 3 by 2. Now put the limit 0 to 2 pi, 0 to 2 pi, 0 to 2 pi. So this is your Z cap component. ये कौन सा है? X cap. ये Y cap. Okay. Now integral 0 to 2 pi 0 because only cos is there. In this is Second one. sin phi cos phi. This will also become 0 because this will become sin 2 pi. So only remain will be this. And what is that? It is E is equal to minus 1 upon 4 pi epsilon naught lambda naught R by Z square plus R square to the power 3 by 2 integral 0 to 2 pi
cos square phi d phi. Only this will remain. And r square. R and R will become r square. And this integral is so simple, it is just upper limit by 2. Upper limit by 2. So it is pi. So it will become minus 1 by 4 pi epsilon naught lambda naught pi r square by z square plus r square to the power 3 by 2 and x cap. So I told you initially also net electric field will be in the minus x cap direction. तो वही है. Net electric field minus x cap direction में आ गई. तो इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस वायर की वजह से होगी वो इधर की तरफ होगी. दिस विल बी ई नेट टुवर्ड्स दिस. देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द z डायरेक्शन, देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द y डायरेक्शन. और वो पहले से ही क्लियर था बिकॉज इसमें जब दिस वाज x, दिस वाज y and this was positive, this was negative. So positive can be taken at this center, negative can be taken at this center. So obviously net field, electric field will be towards this, towards minus x cap. है ना अच्छा क्वेश्चन? Yes, sir. So many things it explains. Mathematics, a vector, this is the point where you should understand the triangle law, not as the mathematics a plus b vector is equal to c vector. उससे कोई feeling नहीं आती. This is the place you should learn triangle law. This is the place you should learn resolution of vector. Resolution. This is the place you should learn the integrals, how the calculus works. अब किसी को कोई डाउट है तो पूछो. सर आपको बता रहे थे कि जब तक फिक्स लिमिट नहीं हो इंटीग्रेशन नहीं हो सकता. वो मैं प्रॉपर्ली सुन नहीं पाया. जैसे मैंने क्यों ब्रेक किया एक्स कैप वाई कैप जेड कैप में, क्योंकि अगर तुम्हारे डायरेक्शन बदल रही है तो तुम इंटीग्रेशन कैसे, इंटीग्रेशन मतलब है जोड़ना, जोड़ने से sir. पहले डायरेक्शन फिक्स हो जानी चाहिए. ओके तो अगर तुमने यहां की वजह से एलिमेंट लिया तो इसकी डायरेक्शन ऐसे ही नहीं रहेगी हमेशा. देखो ये चलता हुआ जब इधर आएगा तो इसकी डायरेक्शन इधर आ जाएगी, उल्टी हो जाएगी, बिकॉज बदल नेगेटिव चार्ज है. ठीक है. सर. तो जब तक उस चीज को फिक्स नहीं करते हो तब तक इंटीग्रेट नहीं कर सकते. तो दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड दैट बिफोर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मींस समेशन, बिफोर summing it up you should fix the direction. So you can note it as put it as a footnote. इसको footnote की तरह लिख लो कि before integration we should fix the direction. और इसी में put कर दो अब z is equal to 0, you will get the field at the center. Put करो और बताओ कितना आ रहा है. सर जेड की वैल्यू माइनस में होगा ना? क्या? जेड आर वेक्टर इज इक्वल टू जेड वेक्टर माइनस आर वेक्टर. क्या कहना चाह रहे हो भाई? सर ये जो आर की वेक्टर आर क्यू की वैल्यू लिखा है माइनस में होना चाहिए ना? किसकी वैल्यू? आर क्यू. ये? यस सर. क्यों? क्योंकि स्मॉल आर वेक्टर इज इक्वल टू जेड वेक्टर माइनस आर वेक्टर. तो ये जगह है आपको मैग्नीट्यूड सीखने की. आपके कहने का क्या नाम है आपका? शेखर. शेखर जी, आप ये बताओ अगर आपको कोई वेक्टर दे दिया जाए r इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप, तो r की वैल्यू कितनी होगी? स्मॉल r ही लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ी फीलिंग आए जो अभी हम लिख रहे हैं. ये स्मॉल r मैग्नीट्यूड है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर. ओके सर, क्लियर हो गया. समझ रहे हो ना? तो yes,
ये सब चीजें एक्चुअली यहाँ पे आके गड़बड़ होती हैं जब आप कॉन्सेप्ट एकदम 100% नहीं क्लियर होता है। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी आपको सीखनी है। ओके सर, थैंक यू सर। हम्म। तो ये एक प्रॉब्लम देखो यही होती है आपको, इसलिए मैं कहता हूं ना कि अच्छी बुक्स हमेशा पढ़नी चाहिए। वन गुड प्रॉब्लम टेल्स यू 10 थिंग्स। एक अच्छी प्रॉब्लम आप लगाते हो, यू लर्न 10 थिंग्स फ्रॉम दैट प्रॉब्लम। ठीक है, आगे बढ़ें फिर। इसमें किसी को कोई डाउट हो? हाँ, तो सेंटर पे लिखा कितना आ रहा है? व्हाट इज द फील्ड एट द सेंटर? minus Pi lambda epsilon 0 upon 4 epsilon naught capital. सॉरी, माइनस lambda naught pi upon 4 pi epsilon naught. 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। R. बस। We cancel. और तो ये भी कैंसिल ही कर दो। कितना आ रहा है? Yes. मिटा दूं फिर? किसी को कुछ पूछना है? अभी भी तो बना हुआ है, यू कैन आस्क। बाद में मत पूछना जब फिगर गायब हो जाएगा। सर ये जो डायरेक्शन वाला बोला था आपने इंटीग्रेशन वाला, ये हाँ, बिल्कुल वैसे ही है ना जैसे हम जिसे फंक्शन दे रखा है जिसकी लिमिट मतलब फंक्शन चेंज हो रहा है अलग अलग लिमिट पे करते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वैसा नहीं है। वहां पे अगर फंक्शन बदल रहा है तो तुम्हें ब्रेक करना पड़ता है, राइट? यस सर। तो अगर उस सेंस में देखना चाहते हो कि यहां से यहां तक फंक्शन का नेचर कुछ और, बट यहां फंक्शन तो सेम है, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट कॉस फाई, राइट? यस सर। तो उस तरीके से समझना सही नहीं है। आप ये सोचो ना कि फील्ड है, जब आप यहां देख रहे हो, इस जेड पे देख रहे हो, ठीक? ये पॉजिटिव है, इसकी वजह से फील्ड आउटसाइड है। आउटसाइड 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 इनसाइड। तो क्या तुम एक बार में इंटीग्रेशन कर सकते हो क्या? नो सर। जो वेक्टर इंटीग्रेट कर रहे थे वो वेक्टर डायरेक्शन ही बदल ले रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिजॉल्व दैट, देन इंटीग्रेट। ओके। ओके ओके सर। हम्म। तो आई एम गोइंग टू इरेज दिस, ओके? Another problem. Note down. Find the electric field. Find the electric field at the tip of uniformly charged cone with charge density rho, height h, and radius r. This is the cone, and let me not make the excesses here. This is the cone,
solid cone, and suppose this is the axis. Okay, like this. Like this. This is X, this is Y, and this is Z. And this is a cone having charge density rho. Rho is the charge density. We want to calculate electric field at this point P. This is the situation. Okay. So please understand, in spherical polar coordinate system, सब लोग ध्यान से देखेंगे, spherical polar coordinate system. This is X, this is Y, this is Z, and this is the sphere. This is a point P at the sphere. This is R. If you drop, so just don't make the sphere. Otherwise वो समझने में दिक्कत होगी. Just wait. Just make the diagram. So suppose this is X, this is Y, this is Z. This is a point P. You want to write it in spherical polar coordinate. This is R. Put a perpendicular on XY plane. XY plane पे एक perpendicular डालो और फिर इस लाइन को मिला दो. X के साथ बनने वाला एंगल azimuthal एंगल phi है. So R theta, R theta and phi, ये मिलके स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट बनाता है. R की वैल्यू 0 to R, थीटा की वैल्यू 0 से पाई, फाई की वैल्यू 0 से 2 पाई. ओके. ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट बनाता है. तो एक बात ध्यान रखना कि अगर मैं थीटा को फिक्स कर दूं तो एक कोण बनता है. इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप थीटा फिक्स करके ऐसे रिवॉल्व कर देते हो तो इट बिकम्स कोण. तो इसीलिए थीटा की लिमिट इज फ्रॉम 0 to पाई, बिकॉज दिस इज थीटा इज इक्वल टू 0. Start increasing theta, it will become pi by 2. So it will cover upper hemisphere. देखो ये घूम रहा है और एंगल बढ़ा 90 हो गया. It is covering upper hemisphere, and जैसे ही it will go to pi, it will cover whole of the hemisphere. Can you see that? Are you understanding this, everybody? So if you fix this, then it becomes a cone. So what is a small volume for a sphere? It is r square sin theta d theta d phi and dr. सबको सीखना पड़ता है एक बार, कोई ऐसे टेंशन मत लेना, बार बार यूज होता है. Everybody will understand. This is the small volume. So what is given here in the case of our cone? क्या क्या given था? Find the electric field at the tip of the uniformly charged cone with charge density rho and height h. So इसकी height is given. H is the height. Okay. So what we have to do, बहुत simple है. We will take a small charge dq here because it is a 3-dimensional. So we have to take a volume. And this charge will create electric field this side. थोड़ा सा अच्छे से बनाना होगा.
this small charge will create electric field this side. This electric field is dE. Please understand this. And similarly, all charges will create electric field this side. So if you take this angle as theta, and let us make this as capital R, this height is h, and this total angle, let us say this total angle is alpha. So at theta angle, this field is dE. So what will happen if you take another charge here? D will be this side. So that means all dE will be added. dE cos theta will be added in this direction. पहले तो ये समझो. So spherical polar coordinate में if I take theta from 0 to alpha, it will be a cone. ये बात समझ में आई? और अगर मैं थीटा को 0 से 2 पाई कर दूं तो स्फेयर बन जाएगा. Is that okay? Hello? Yes, sir. ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. ये नोट कर लेना सब लोग. स्मॉल वॉल्यूम, ये बार बार यूज होगा. स्मॉल वॉल्यूम एंड दिस इज स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. जो x होता है इसमें वो होता है r sin थीटा cos फाई. जो y होता है वो होता है r sin थीटा sin फाई. और जो z होता है वो होता है r cos थीटा. ओके, सो ये हटा देता हूं. दिस आई विल बी यूजिंग. So now, if you take this using Coulomb's law, so नीचे की इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं dE डैश लिखूं तो that is dE cos of theta, the electric field towards the minus z cap direction. Because by symmetry you can see if you take another small charge here, the field will be this direction. So sine component will be cancelled and cosine component will be added. Is that okay? बोलो भाई. So dE dash कितना हो जाएगा? Coulomb's law लगाओ. 1 by 4 pi epsilon naught dq by, let's take this distance as something. This distance, मैंने जो notation लिया है वही ले लेता हूँ. So this distance is small r. Small r. So it will become dq by small r square into cos of theta. And dq will be small charge is rho d tau. Small charge density. So rho d tau will be r square sin theta d theta d phi dr. Understand this. So dE dash कितना हो जाएगा? 1 by 4 pi epsilon naught rho r square sin theta d theta d phi dr into, बोलो भाई, by r square into cos theta. सही लिखा है? Yes, sir. So electric field E will be, now direction is fixed, so we can integrate. It will be integral dE dash, which is, so this r will be cancelled now.
Yes, sir. So integration will be phi is not a problem. So d phi का integration simply हो जाएगा 1/4 pi epsilon naught. Phi is not a problem. So it will be rho by 4 pi epsilon naught and into 2 pi. Correct? Now we have double integral because we have sine theta, cos theta, d theta and dr. Now r will go from, इस line को देखो, it will go from 0 to this. देखना ध्यान से. So make this triangle. So here r is 0. This angle is theta. Here, what is the value of r? This is r, this is h. बताओ. The whole hypotenuse. Sir, H. So tan theta is perpendicular by base. हाँ बताओ भाई. Same, sir. What will be the value of hypotenuse in terms of theta? यहाँ पे इस r की वैल्यू 0 है और जब ये बड़ा होके यहाँ बन जाएगा तो this will become this triangle. So what will be the value of r? Capital R upon sin theta. Capital R upon sin theta. Sin theta. और h upon cos theta. H upon Cos theta. cos theta. So r will become h upon cos of theta. So put the limits. The theta will be going from 0 to alpha and the r will be going from 0 to h by cos theta. This is the situation. What is alpha? Alpha is this triangle. This is alpha, this is r, this is h. So what is tan alpha? R by h. R by h is tan alpha. Okay. Now this is okay. So देखो, the r will be going from 0 to here, but the theta will be going from 0 to alpha, and alpha is this. Is that okay now? Now ये देखो, this is double integral, but we have to integrate it intelligently so that last में we get a number. So first of all, you should integrate it in this sin theta, put this limit, and then integrate it with respect to r. चलो करते हैं. Let us do this. So dr का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? r and limit is h by cos theta. So calculate करो. So it will become, बोलो भाई, समझ आ रहा है? sin theta. ये इंटीग्रेट करो. dr का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? R. r तो कितना आ जाएगा? H upon cos theta. तो sin थीटा आ जाएगा. तो 2 पाई कितना हो जाएगा? 2 पाई रो by 4 pi epsilon naught. Here you will get h by cos theta.
H upon cos theta, no? So H will be there, no? And sin theta का minus cos theta and limit is 0 to alpha. So what is cos theta? It will be, बोलो भाई, put the limits. 1 minus cos alpha. So 2 pi, let us cancel this 2. So it will become rho h by 2 epsilon naught 2 epsilon naught 1 1 minus cos alpha. cos alpha. And let us now calculate cos alpha. What is cos alpha? This is root of h square plus r square. What is cos alpha? Base upon hypotenuse, h by under root h square plus r square. Is this okay? So what will be E now? E will be rho h by 2 epsilon naught 1 minus h by under root h square plus r square. This is your final expression. And what is the direction? Minus z cap. Okay? So है ना बढ़िया? So if you integrate this volume, please see this. If you integrate this volume in this total limit, you will get the volume of the cone 1 by 3 pi r square h. Do it as a homework. Integrate this volume in the limits for this cone. So you will get total volume is equal to 1 by 3 pi r square h. Do as a home exercise just for fun. Okay? इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो. सर हाँ. माइनस cos थीटा का कैलकुलेशन कर प्लीज बताएंगे. इसमें कैसे है? ये बहुत मुश्किल है, ये नहीं सीख पाओगे क्योंकि इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा जो है डी थीटा वो माइनस कॉस थीटा होता है, तो बहुत ही टफ है. मैंने सर वो नहीं, बीच में हमने कहीं तो बोला, जब मेरे बीच में नेट चला गया था कि हमने सब्स्टिट्यूट किया है वैल्यू. तो भाई dr को इंटीग्रेट किया तो r आ गया. हाँ. अपर लिमिट लगाया. ओके. तो h बाई कॉस थीटा माइनस 0. कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया. साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा हो गया. ओके. क्लियर. मैं सोचा आप ये पूछने लगे कि इंटीग्रल साइन थीटा क्या होता है. वो आता है. ओके. और किसी को कुछ पूछना है आराम से पूछो भाई. देखो, so much things to learn in a single question. तो डायरेक्शन बता दो एक बार. हाँ, किसका? डायरेक्शन z कैप माइनस. अरे भाई यहाँ dq चार्ज है और रो पॉजिटिव गिवन ही है कि रो चार्ज डेंसिटी है. dq चार्ज है तो dq चार्ज की वजह से इधर होगा और जब रिजल्टेंट ले रहे हो तो इधर आ रहा है. तो ये कौन सी डायरेक्शन है? जब ऊपर z है तो नीचे z कैप है माइनस z कैप. Yes or no, Parampreet? Yes sir, yes. You were not there yesterday. Yes sir, I was absent. तो वो देख लेना क्लास एक बार. Yes sir, yes. EMT में कोशिश करो कि क्लास मिस मत करो, क्योंकि एक एक दिन में देख रहे हो जो फाउंडेशन डेवलप होगा. अब ये सब दोबारा कैसे डिस्कस करेंगे? ठीक है, Yes, sir. कोशिश करो. हाँ भाई, और किसी को कुछ पूछना है? चलो, वेरी गुड. कुछ पूछना है तो आराम से पूछ लो और वो होमवर्क करना जो मैंने बोला है. सर ये लिमिट्स एक बार बता दीजिए. कौन सी लिमिट? ये वाली? सर ये नो सर नीचे इधर E is equals to rho by 4 pi epsilon naught into 2. सर अपर. यस.
ये Yes, sir. Yes, sir. तो This one. तो देखो डी फाई तो सीधा इंटीग्रल 0 to 2 पाई होके Yes, 2 sir. पाई हो गया। Yes. थीटा की लिमिट कहां से कहां है? तो थीटा, ये देखो दिस इज, दो चीजों की लिमिट हमें लगानी है, डी आर की और डी थीटा की। तो थीटा की लिमिट है 0 से अल्फा, वो ये लिख दिया। हाँ, और आर की लिमिट कहां से कहां है? तो आर ये था, तो आर सबसे छोटा होगा अगर तुम यहीं रह जाओ, आर इज इक्वल टू 0, सो दिस पॉइंट इज आर इज इक्वल टू 0 एंड दिस पॉइंट is r is equal to h by cos theta. So you see this is the value, this is the value r and this is the value. So what is this value? This value cos theta is equal to base upon hypotenuse, right? So what is Okay, the value sir. of this hypotenuse? H by cos theta. Okay. Okay. Okay, Neha? It's Nayan, sir. Oh sorry, Nayan. So दूर से screen पे ना। Okay, sir. हाँ, नयन ठीक है। Yes, sir. चलो फिर नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग, तो यू कैन सी दैट कूलॉम्स लॉ इज बिकमिंग लिटिल डिफिकल्ट ना, इतने ढेर सारे। तो फॉर सम सिमेट्रिक Okay. सिस्टम we can manage it using Gauss theorem. So next class, from next class I will start Gauss theorem. Okay, किसी को कुछ पूछना है इसमें? चलो, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.